हेलो। 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 ओके। आज पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हो पाएगा या नहीं? हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? व्हाट फॉर इट? हेलो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन। ध्यान से यादव, तैयारी हो गई नूर भाई आपकी? हाँ मतलब कल लास्ट डे है। आज और कल का दिन है हमारे पास। क्या है कि आईओटी सब्जेक्ट है। पहली बात, आईओटी मतलब उसमें
कम से कम 50% तो खुद से लिख सकते हैं बना करके। उतना तो नॉलेज सबको होता है कि आईओटी में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आईओटी में, क्योंकि वो बहुत ईजी सब्जेक्ट है और उसकी नॉलेज पहले से है सबको, तो वो इजीली हो जाएगा। और रही बात कितने सब्जेक्ट हैं भाई, मेरा टोटल सब्जेक्ट है 3। फर्स्ट वाला होगा आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और फिर उसके बाद होंगे 2। एक होगा कंपाइलर डिज़ाइन और एक है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अभी मैं सोच रहा हूँ आराम से, मतलब मैंने आईएमपी शॉर्ट नोट तो लिख लिया है सारे सब्जेक्ट के, तो अभी मैं सोच रहा हूँ आराम से रिवीजन करूँगा। पता है जब ज़्यादा टाइम होता है तब पढ़ने का मन नहीं होता, जब एंड टाइम आता है ना, जैसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तब ऑटोमेटिक पढ़ना आ जाता है। हेलो। यही प्रॉब्लम है भाई, मैं बना बना के पता नहीं क्यों लिख पाता हूँ, बना के नहीं लिख पाता हूँ। एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है भाई मेरे को। ओके, एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, तो उसमें वेब डेवलपमेंट आता है आपको? वेब डिज़ाइनिंग मतलब शायद वेब डेवलपमेंट, तो उसी के बारे में मिला करके जो भी क्वेश्चन हो तो मिला करके लिख सकते हैं। जैसे मेरा आईओटी का है, तो आईओटी में क्या होता है, स्मार्ट होम होते हैं, और स्मार्ट होम में क्या होता है, सेंसर्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं और फिर वो डेटा आगे प्रोसेस करते हैं दूसरे सेंसर को। एक्चुएटर्स बोलते हैं जो डेटा के उससे हिसाब से परफॉर्म करता है कोई टास्क। और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो आईओटी के हिसाब से होते हैं, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बाइक, स्मार्ट कार, स्मार्ट होम, स्मार्ट इंडस्ट्रियल, और ऐसा बहुत कुछ है। एच टी एम एल सी एस एस जावा भी ये सब है। एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट ये सब है, तो ये इजी तो है, इसमें कहाँ टफ है। एच टी एम एल मतलब शायद ऊपर का जो फ्रेम टाइप होता है वो, मतलब मेन स्ट्रक्चर जो होता है, सी एस एस मतलब उसे डिज़ाइन कर देना है, और जावा स्क्रिप्ट मतलब उसके बारे में बेसिक जो अपना बैकएंड में मान के चलो कोडिंग जो होती है वो लिख देना है। तो उसे इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर अपन लिखने पाए तो लिख सकते हैं। एच टी एम एल के बारे में सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट, और इनसे मिला के क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप जाओ यूट्यूब पर, वहाँ पर सर्च करो, बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी कितना टाइम है आपके फाइनल एग्ज़ाम में? एक काम करता हूँ, मैं रखता हूँ मोबाइल अपना, मतलब ये माइक रखता हूँ यहाँ नीचे, यहाँ पर। और मेरा 20 से है भाई। 20 क्या दिसंबर, क्योंकि 20 ये वाला तो निकल गया। 28 चल रहा है नवंबर। 28 वो 24 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम है। हेलो। अगर 24 दिसंबर से है तो बहुत ज़्यादा टाइम है, पढ़ सकते हो उसके लिए। अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं तब थोड़ा दिक्कत आ सकती है, वरना 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी पढ़ सकते हैं शुरू से।
तो अब मैं करने जा रहा हूँ अपना रिवीजन, जो कि है आईओटी। से और साइड करता हेलो। फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। व्हाट इज द फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी? यहाँ पर पूछा हुआ है आईओटी का मतलब फिजिकल डिजाइन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी। द फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी refers to the hardware involved in IoT system, including devices, sensors, actuators, and communication networks. These components work together to collect data, process it, and take decisions on its insights. IoT devices, sensors, actuators, communication networks, gateways, power sources, embedded systems, including include sensor actuators and smart devices that collect data and respond to data. Sensor measure physical parameters like temperature, humidity, and motion. Actuators perform action based on data like turning light on fans, adjust wall. Communication network enable data transfer using Wi-Fi, Bluetooth, GP, or cellular networks. Gateways. Gateways connect IoT devices to the internet or cloud platforms. Power sources. Power sources क्या हो सकते हैं इसके लिए? Power sources including batteries, solar panels for direct currents for powering device. Embedded system combine hardware and software to perform specific tasks. अभी सिंपल ये जो इसका एक पेज का आंसर है, इसे हम सिंपली हम 2 से 3 पेज में आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन है, छोटी सी तो उससे बड़ा कर सकते हैं, अपने तरफ से और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये जो पॉइंट लिखे हैं अलग से, तो उन्हें भी हम 2-2, 4-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है इंक्लूडिंग सेंसर, एक्चुएटर्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस, अपनी तरफ से और कुछ ऐड करके हम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद दैट कलेक्ट डेटा एंड रिस्पॉन्ड टू डेटा। Sensors measure physical parameters like temperature, humidity, and the motion. The actuator perform action based on the data like turning on light, fans, adjust or etc. Communication network gateways, power sources, embedded system. Logical design of IoT. What is the logical device? अभी physical हो चुका है तो उसका logical design क्या हुआ? The logical design of IoT defines the abstract component process and architecture of IoT system. The logical design of IoT defines the abstract component process and the architecture of the IoT system. It focuses on how data is collected, processed, stored, and utilized rather than on physical hardware. Yet this और इसे रखता हूँ ऐसा। ठीक है, तो अब पढ़ने में ज़्यादा सही रहेगा।
Deva Yadav. Hello. Now it's the best position for mic. Alright, तो देखो यहाँ पर the logical design of IoT defines the abstract component, processes, and the architecture of IoT system. It focuses on how data is collected, processed, stored, and utilized rather than a physical hardware. Things and IoT abstract representation of devices that collect data and process it. Communication model define how data interact like request, response, publish, subscribe. Communication model means how device interact like request, response, publish, subscribe. IoT protocol uses MQTT, HTTP, and COAP or WebSocket for data exchange. Data flow. IoT prot I, things in IoT communication model IoT protocols. Data flow and processing units. Processing units, logical algorithm and workflow for analyzing collected data. Security layer, logical design for authentication, encryption, and secure data access. Security layer, logical design of authentication, encryption, and secure data layer. एप्लीकेशंस ऑफ IoT, एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं IoT के, मतलब हम IoT को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो सब लिखा है. फॉर एग्जांपल स्मार्ट होम, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल IoT, retail, smart cities, environment monitoring. Smart homes means automate applications, appliance lighting, doorbells, security, etc. Healthcare enable remote monitoring, fitness tracking, and smart medical devices Agriculture uses IoT for precision farming, weather monitoring, and smart irrigation. Transportation power smart traffic management, connected vehicles, and logic logistic tracking. Industrial IoT. What is the industrial IoT? Enhance manufacturing, predictive maintenance, and supply chain management. Retail provides inventory management, smart walls, and personalized shopping experience. Smart cities improve the waste management, public transport, and energy efficiency. The smart cities improves waste management, public transport, and energy efficiency. Environment monitoring track air quality, water level, and patterns. Weather patterns means सर्दी गर्मी ये सब जो होता है. Okay, what is M2M in IoT? मतलब machine to machine IoT. It is direct communication system between devices using wire or wireless communication channel without any human interaction. It is direct. Okay, what is M2M in IoT? It is direct communication system between devices using wired or wireless communication channel without any human interaction. It collected it collects data and share it with other connected devices. M2M systems are facilitated by artificial intelligence and machine learning, means AIML technologies, which enable systems to interpret data and make informed choices. Means it is direct communication system between devices using wire or wireless communications. Okay,
Without any human interaction, it collects data and shares it with other connected devices. MDM systems are facilitated by AI intelligence and machine learning technology, which enable systems to interpret data and make informed choices. There are also a lot of point means smart स्मार्ट सिक्योरिटी M2M को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम स्मार्ट सिक्योरिटी के तौर पर security cameras and alarm system can alert the user when there's activity. User can also remotely connect to these systems to monitor their home, business, pet or valuables. Okay. Okay. The smart security done construction manage mechanisms, manage machine, material, and process from one control to platform. Health monitor for healthcare monitor vital sign support support or handicap walls, elevator, vending machines, and vehicles. Facility management automates home buildings and campuses. It enables communication between remote and area networks. End-to-end gateways are used. End-to-end It enables communication between remote and area networks. End-to-end gateways are used. End-to-end gateways native protocol translation, proxy, routing, and end-to-end nodes. End-to-end area networks protocol sync non-IP based protocol are used within end-to-end area networks. What is SDN? Software Defined Networking. SDN is a networking architecture that separates the control panel from the data plane and centralizes the network control, router, control terminal, and data plane. Software-based SDN controller maintain a unified view of network and make the configuration management and provisioning simpler. Okay, SDN is a network architecture that separates control panel from data panel and centralize the network controller. SDN uses simple packet forwarding hardware opposed to specified hardware in the conventional networks. Application layer, app, APIs, network operating system, control panel, open flow as interface. Key elements of SDN centralized network controller, programmable open APIs, standard communication interface, and FE and FV. There is network function virtualization. Network function virtualization. E-commerce. Hi, are you in fifth semester? No, I'm in seventh semester. Fourth, seventh and fourth. Network function virtualization refer to the replacement of traditional network hardware like routers and firewalls. It provides scalable, flexible, and cost-effective network management for IoT ecosystems. Virtualized function replace physical devices with software for routing and firewall and deep latency. Virtualized function scalability, improved performance, fault tolerance, IoT integration, security. NFV virtualized function, NFV virtualized function, scalability, improved performance, fault tolerance, IoT integration, and security. Virtualized function means replace physical devices with the software for routing and firewalls. Scalability adapt to IoT component devices and data demands easily. Improve performance, ensure efficiency, network management, and low latency. Fault tolerance. Virtualized network recover quickly from failure. Virtualized
Virtualized network recovers quickly from failure. IoT integration support IoT-specific requirements like edge computing and lightweight protocols. Security. The strength of IoT network with virtualized firewalls and integration intrusion detection system. And F data data center IoT, IoTF1, IoTF2, IoTF3, virtualization layer, hardware layer, IP network, IoT gateways, sensor and actuators management, data link layer, apps virtualization layer, hardware layers, IP network, IoT gateways, sensor and actuators. हेलो भाई, नहीं अभी फोर्थ ईयर चल रहा है मेरा। Data storage in IoT. How many data storage in IoT application? In IoT, data storage refers to the system and technologies used to store the massive volume of data generated by IoT devices. The data can be stored locally at the edge or in the cloud IoT cloud, depending on the requirement for processing requirement and accessibility. Depending on the requirement for processing requirement, security and accessibility. There are lots there are six types of data storage in IoT. First one, local storage, edge storage, cloud storage, hybrid storage, soft structure storage, and unstructured storage. In IoT, data storage refers to the system and technology used to store the massive volume of data generated by IoT devices. The data can be stored locally at the edge or in the IoT cloud, depending on the requirement for processing requirement and accessibility. Local storage store data on the device itself or nearby system for immediate access and low latency. Edge storage. Save data at the edge devices gateways to process data closer to the source, reducing bandwidth. Cloud storage. Centralized storage for large scale long-term data access and analysis. Data access analysis. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? IoT, Internet of Things. यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ, अब बेटर हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, that's good. गुड इवनिंग कृष्णा। एग्ज़ाम कब से है? परसों से, 30। आज 28 है, 29, 30, 30 तारीख से। और मुझे सिर्फ IoT का पढ़ना है, फिर उसके बाद 3-4 दिन का गैप है। Okay, so data storage in IoT. In IoT, data storage refers to the system and technologies used to store the massive volume of data generated by IoT devices, and the data can be stored locally at the edge or in the cloud system,
depending on the requirement for processing, security, and accessibility. Local storage, edge storage, cloud storage, and hybrid storage, structured storage, unstructured storage. There are six types of storage. Storage and storage combine local and edge cloud storage flexibility and efficiency structure. Use database like SQL for organized relational data. Unstructured and NoSQL like module. What is the IoT-based services? IoT-based services. IoT cloud-based services refer to use of cloud computing platform to manage, store, and analyze the vast amount of data generated by IoT devices. These services provide scalable infrastructure development platforms and tools that help organizations monitor IoT devices. Device management, data storage and processing, real-time analytics, IoT application development, security, services integration with IML, APIs, and SDK. IoT cloud-based services, device management, data storage and processing, real-time application analytics, real-time analytics, IoT application development, integration with IML, APIs and SDK. आपके कितना CGP है? अभी currently 7.02. IoT cloud-based services, device management, data storage and processing, real-time analytics, IoT application development, security services, integration with IML, APIs and SDK. 7.02 CGP. Alright. IoT cloud-based services refer to use of cloud computing platform to manage, storage, and analyze the vast amount of data generated by IoT devices. These services provided scalable infrastructure, development platform, and tools that help organization to monitor IoT devices. Device management, data storage, processing, real-time analytics, IoT application development, security services, integration with IMLs, and API and SDK. Design principle for web connectivity. The next clearly unit 30 start हो गई. Unit 30. Design principle for web connectivity in IoT focus on creating robust, efficient, and scalable framework that enables seamless communication between IoT devices, servers, and applications over the internet. Design principle for a web connectivity in IoT focus on creating robust, efficient, and scalable framework that enables seamless communication between IoT devices, servers, and applications over the internet. These principles ensure interoperability, security, optimal performance,
performance of IoT system in a connected ecosystem. Interoperability. What is the interoperability? Use a standardized protocol like HTTP, MQTT, and COAP for communications. Secure communication. Implementation encrypts TLS and authentication to safeguard data. मेरा तो सीजी भी नहीं है, आपके कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए कंपनी से नहीं आ रही? इंटर्नशिप के लिए नहीं आती, डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए आती है। हाँ, मतलब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप फोर्थ ईयर से स्टार्ट हो जाता है दोनों। फोर्थ ईयर। Design principle for web connectivity in IoT focus on creating robust, efficient, and scalable framework that enables seamless communication between IoT devices, services, and applications over the internet. These principles ensure interoperability, security, and optimal performance of IoT systems in connected ecosystem. Interoperability secures communication, implementation includes TLS and authentication to specified data. Low latency optimizes connections for minimal delay in real-time device recovery, enable automatic detection and interpretation of IoT. Listen protocol and communication mechanism to save battery life. Fault tolerance enhance system to handle failure in limit. Web connectivity, web communication protocol, and message communication protocol. HTTP is widely used for device communication. Focus on request-response communications. High latency due to repeated connections. High latency due to repeated connections. Suitable for web-based IoT application. Easy to implement with REST APIs. Easy to 6 GPA नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी आने लगे, तब मेंटेन कर लेना। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में। जब कंपनी आने लगे तब मेंटेन करता है सब। अभी खाली स्किल इम्प्रूव कर रहे हो, और जब कंपनी आने वाली हो तब इम्प्रूव कर लेना। HTTP is widely used for device communication, focus on request response communication, high latency due to repeated connections. So therefore suitable for web-based application, easy to implement with HTTP. Example, HTTP and WebSocket. Higher data overhead uses SLA, TLS और security. अनुराग पटेल, बहुत बढ़िया भाई, गुड। प्रॉब्लम कैसे नहीं है? तो भाई पढ़ो जाके इम्प्रूव करो उसे। अभी कौन से ईयर में हो? SOAP, Simple Object Access Protocol. Simple Object Access Protocol. SOAP is a protocol for exchanging structured information in implementation of web services. It relies on XML for message formatting and can be used over multiple protocols. Most commonly used HTTP and SMTP. So, SOAP ensures that web services communication is standardized, secure, and is reliable, making it suitable for applications that require strict security and compliance. DSAM डेवलपमेंट कैसा चल रहा है भाई? अभी मेरा स्टॉप है क्योंकि फोर्थ ईयर चल रहा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में। तो अभी रोक के रखा है, लेकिन बाद में करेंगे 10 तारीख से, क्योंकि 10 तारीख को एंड हो जाएंगे सारे एग्जाम। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल बचेंगे, तो प्रैक्टिकल नॉर्मल होता है। SOAP is a protocol for exchanging structured
exchanging structured information in the implementation of web services. It relies on XML for messaging format. It can be used over multiple protocols, used commonly HTTP and SMTP. SOAP ensures that web services communication is standardized, secure, and reliable, making it suitable for applications that require strict security and compliance. XML-based protocol support multiple protocol error handling, stateful or stateless security. कोई ऑफर मिला नहीं, अभी नहीं। कंपनी आनी स्टार्ट हुई है, अभी फोर्थ ईयर जब तक है, जब तक आएंगी। XML based SOAP messages are formatted in XML, make it platform independent protocol. SOAP is a protocol, not a architecture style like REST. It defines rules for communications. SOAP define rules for communications. Support multiple transports. SOAP can be used over HTTP, SMTP, and more, providing flexibility. Error handling. SOAP has a standard way to handle errors using the fault element within the XML response. Stateful or stateless. Off campus. If you don't mind, I want to know your age. Maybe 21 or 22. आपके कॉलेज में लगभग कितनी कंपनी आती है? कंपनी तो बहुत आती हैं, करीब 6 लाख के पैकेज, 3 लाख के पैकेज, 10 लाख पैकेज, ऐसा। ऑफ कैंपस, हाँ ऑफ कैंपस भी ट्राई करेंगे, ऑन भी ट्राई करेंगे। एक्सप्लेन रेस्ट इन IoT. REST is the architectural style used for designing network applications. It leverages standard HTTP method to enable interaction with web services through a stateless and client-server model. REST emphasizes simplicity, scalability, and flexibility, making it deal with building lightweight and efficient APIs. Stateless. Each request from client contains all the information needed to the server, does not store session state. Thanks, bro, Anurag Patel. Stateless. Each request from client contains all the information needed. The server does not store session state. Multiple formats. Support JSON and XML and more. For data exchange, with JSON being the most common. Caching. Support caching of response to improve performance and reduce server load. Client-server separation. Client-server separation. REST ensure a clear separation between client and the servers. HTTP method like get, post, put, set, delete. HTTP is RESTful. HTTP RESTful. HTTP RESTful refer to the implementation of REST principle using HTTP as the underlying protocols. HTTP